नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम कक्षा 9 के पाठ 11 एक यात्रा है भी रामदास मिश्र जन्म सन 1924। रामदास मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। अपनी कहानियां, काव्य, उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। उन्होंने बहुत चर्चित उपन्यास जल टूटा हुआ और पानी के प्राचीन, आपकी कविताओं के संग्रह बेराम चिट्ठी, पग गए धूप, जब जा रहा है, आम के पत्ते, आपके कहानी संग्रह, खाली घर बसंत का, एक दिन, इकट्ठ कहानियां तथा मेरी प्रिय कहानियां, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा लंबी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उससे जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्यों बोध से प्रेरित प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयता पूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरकदायक है। यहाँ एक यात्रा यह भी के लेखक नो एक दिवसનો પ્રવાસ રામદાસ મિશ્રજી ने सुंदर रीते वर्णन करेलो છે। तो कहते एक दिवस यात्रा एक कहानी है और कहानी में एक रिक्शा वाला, उनकी एक जीवन की घटना यहाँ घटित की गई है, जो एक घटना नारी के प्रति कितनी संवेदनशील है और आज के युग की समानता दर्शाता है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं नारी सम्मान के लिए, नहीं दिखावा है, मगर जो सच बात है वो करके दिखाने वाला रिक्शा वाला आपको स्त्री सुरक्षा, आत्मीयता संबंध की खूबी बताता है। तो हम देखिए, मैं बहुत यात्रा बेरू हूँ, यात्रा पर निकलते समय डर बनता होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी असमंजसता तो अनुभव होती है। अनशन किराया मांगने वाले ऑटो से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। આપણે જોઈએ છે કે લેખક કહે છે કે હું મને ફરવાનું યાત્રા કરવાનું બહુ જ ગમે છે। યાત્રા ઉપર નીકળ જતા પહેલા આપણને ડર પણ લાગતો હોય છે, પતા નહીં, આપણને ખબર નથી કે આપણે કેવા લોકો સાથે એમના સાથે વ્યવહાર કરવો પડે। सबसे बड़ी असमंजसता अनुभव होते हैं અને આપણને એકબીજા સાથે क्यों असहजता કે કોઈ પણ આપણે અજાણ વ્યક્તિ હોય એના સાથે મિત્રતા પણ વધુ પડતી હોય છે, એના સાથે આપણે અનુભવ થતા હોય છે। अनशन किराया मांगने वाले ऑटो से नए शहर में कैसे पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ये चिंता भी बनी रहती है। આપણે નવા નવા ક્યાંય ગયા હોય અને રિક્ષાવાળા સાથે આપણે ઓટો રિક્ષાવાળા પાસે કે नवा नवा शहर में गया होगा तो नजीक होय पण आपणा पासेथी भाड़ो केटलो वसूल करता होय छे, एवा लोकोथी आपणे चिंतित करावता होय छे। चिंता भी बनी रहती है અને આપણને કેવો માણસ ભૂલી જાય એની આપણને चिंता रहती है, कारण કે આપણે प्रवासी છીએ, આપણે એ સ્થળના અજાણ છીએ। हम उस स्तर से कैसे अजान है, इसलिए हमको कहीं तरह लूट न ले, इसी बात की चिंता रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना
લેખક કહે છે કે મને મારે ડોક્ટરને મળવા માટે ક્યાં જવું પડે? ગ્વાલિયર જવું પડે છે। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वसित बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले ने पीछे पड़ गया। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाओगे? ही और कोई ऑटो करेंगे तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसी आकर्षण महसूस हुई कि मैंने स्वीकृत कर दी કે છે અહીં ડોક્ટરને મળવા માટે લેખકને ગ્વાલિયર જવાનું છે। એમની પત્ની પણ સાથે છે। इसलिए કે છે મને એવું થતું હતું, એમના અંદર ભય સતાવતો હતો। સ્ટેશન પર ઉતરીને ઓટોવાળા પાછળ ચડી જતા હોય છે। તો કે છે હું ઉતરીને ચૂપચાપ ચાલતો હતો અને આગળ જઈ રહ્યો હતો। एक नवयुवक ऑटो वाला रिक्शा वाला पाछળ पड़ी जाए છે। कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उनके लेखक હું કઈ કહ્યા પર આગળ વધતો રહ્યો। उसकी आवाज आई અને ऑटो वाले आवाज मारी, बाबूजी आप आखिर कहां जाओगे? અને કહે છે કે બાબુજી તમે આખિર ચાલીને ક્યાં સુધી જશો? कोई ऑटो करेंगे तो તમે આગળ જઈને પણ ઓટો રિક્ષા પણ કરશો જ નહીં। फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? અને તમે કરશો તો હું તમારા સાથે આવું છું તો મારી ઓટો રિક્ષા કેમ નથી કરતા? इसकी जीत और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण था। અને ઓટો વાળાની જીત અને અવાજની અંદર કઈ જાદુ હતો। महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृत कर दी અને કહે છે કે મને એવું મહેસૂસ થયો એના અવાજનો અને મેં એને સ્વીકાર્યું। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। कहते हैं मैंने प्रेम भरी बातें करी और डॉक्टर ने क्यों पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वंचित पैसे देकर डॉक्टर ने घर की कॉल बेल बजाई અને કે છે કહ્યું એ પ્રમાણે મેં એને કિરાયો આપ્યો અને ડોક્ટરના ત્યાંજે બારણા અને બેલ દબાવે છે। જ્ઞાત हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। મને ત્યાં જઈને ખબર પડી કે ડોક્ટર સાહેબે જે એમની ક્લિનિક હતું કે જે દવાખાનું છે એની જગ્યા બદલી દીધી। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंच दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? અને ઓટો વાળો છે એ વગર બતાવે અમારો ઇંતજાર કરતો હતો અને અમે નઈ જગ્યા પર અને કે છે જે જગ્યા ડોક્ટર રહેતા હતા ત્યાં આગળ તેણે અમને પહોંચાડી દીધા। बाबूजी जो ऑटो वाला बिना हमारे मैंने पूछा कितने पैसे दूं? અને એને ઉતારે એટલે કે છે કે તમને તારું કિરાયો ભાડું કેટલું થાય? કેટલા પૈસા આપો? बाबूजी जो इच्छा हो दे दो। वैसे डॉक्टर के घर यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है। અને કે છે કે ડોક્ટરના ઘરથી અત્યાર સુધીનું ભાડું છે એ તો પૂરું થઈ ગયું। તમારી જે ઈચ્છા હોય એ મને આપો। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाओगे? અને રિક્ષાવાળા પૂછે કે બાબુજી તમે અહીંથી ક્યાં જશો? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ यहाँ देर लग सकती है। અને કે છે કે मैं होटल जाऊं नाम बताવી દીધું અને કે ભાઈ તમે જાઓ રિક્ષાવાળાને મારે વાર થશે। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए અને કઈ બોલા નહીં। અમે ડોક્ટરના પાસે ગયા। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। અને કે છે કલાક પછી હું નીકળ્યો ત્યાં સુધી એ રિક્ષાવાળો મારો इंतजार करता था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो कुछ और है। અને પછી મને વિશ્વાસ થવા લાગ્યો કે આ ઓટો વાળો છે એ કંઈક બીજા બધો જુદો છે। वह हमारे भीतर घर करता गया અને કે છે કે અમારો વિશ્વાસ જીતતો રહ્યો। भीतर का घर करना विश्वास जीतना।
होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं, અને हमने होटल पर ऑटो वाला ने छोड़ी અને કહે કે मैं अब હું પાછું ક્યારે આવું। उसने पूछा फिर कब आओ, यानी आप शहर में घूमने फिरने न, आपको जहां जाना होगा ले चलूंगा, कि હું ક્યારે આવું, તમારે આ શહેરમાં નવા છો, તમારે ફરવા જવાનું છે, હું તમને आपको जहां जाना हो ले चलूंगा, તમારે જ્યાં જવું છે ત્યાં હું લઈ જઈશ। वैसे यह कब तक है, कल शताब्दी से लौटेंगे, इसके તમે કેટલા દિવસ માટે રહેવાના છો અને એક અઠવાડિયા માટે રહેશો, तो आपको घुमाने के लिए कब आऊंगा, અને કે છે તમને શહેર બતાવવા માટે ફરવા માટે હું ક્યારે આऊं। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। इसके લેખકે જવાબ આપ્યો કે ભાઈ આજ તો અમે થાકી ગયા છે, પરંતુ કાલ घूमेंगे फिरेंगे, आज आराम करीશું, આજે ઊંઘ લઈશું અને કાલ ફરવાનો વિચાર કરીશું। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करें करके बुला लीजिएगा। ठीक છે બાબूजी, મને આ મારો મોબાઈલ નંબર છે, તમે ફોન કરીને મને બોલાવી લેશો। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, અને લેખક कुछ कह रहे दे तारो नाम तो बतावी नहीं, कहता है मेरा नाम मोहन। मोहन अच्छा नाम है, जिसे मोहन सारो नाम से। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया, वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान देखता गया, અને કે એ પ્રેમથી ફરવા લઈ ગયો અને પછી એક સ્થાન બતાવતો ગયો। बाबूजी और पानी पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा, અને પછી લેખકને બાબूजी કહેતો હતો અને એમની પત્નીને માતા કરીને નામથી સંબોધતો હતો। घूम घूम कर होटल पर लौटे तो चाय पानी के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया, કે ફરી અને આવ્યા પછી એને પણ ચા અને પાણી માટે લેખકે એમના રૂમની અંદર બોલાયા। तो बहुत संकोच के साथ आया, और કે આ વ્યક્તિ શર્માળ હતો એટલે संकोचથી આવ્યો। चाय पानी के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई, અને ચા અને પાણી પીતા હતા ત્યારે हमारी જે पारिवारिक કે પરિવારની જે વાર્તા હતી शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो, मारी पत्नी ने पूछा कि बेटा तुम ग्वालियर नो छे। नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ा है, અને કે नहीं माताजी हूँ आगरा नो छूं, અહીં मारे आवવું પડે છે। मैं हमें लगा कि वह हम यह कहते कहते कुछ पर भर आए, અને એમ કહેતો કહેતો આ બાળક છે रिक्शा वाला व्यक्ति ये आंखों भराई आई, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, અને પછી मैं चुप થઈ गया અને ये जाते જ કંઈક બોલવા લાગ્યો। आगरा में अपना घर है, અને પૂછ્યું કે આગ્રામાં તારું ઘર છે। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, उनकी जी माता पिता बचपन से मरी गए थे। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, उनके जो मोटा भाई मारे परवरिश ने मने मोटो કર્યો છે, ઉછેર કર્યો। भाई वकील है, અને ભાઈ કેવો છે વકીલ છે। मैं भी बीए पास हूं, उनके હું પણ बीए पास છું। कोई नौकरी खोज रहा था, અને હું नौकरी ની શોધમાં હતો। एक चुप्पी सी छा गई, અને थोड़ी बार માટે અમે બધા खामोश થઈ ગયા। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है, उसे छोड़
छोटा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी, झिझकती सी हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। અને કે એક દિવસ છે હું નોકરીની શોધમાં ફરી રહ્યો હતો અને કે છે આના સાથે કોઈ એવો ઘટના બની છે। અમે થોડીવાર બંધ થઈ ગયા, लगा कि उसके साथ कोई अनिश्चित घटना घटी है। इसके ना साथ कोई एवी घटना बनी છે એને, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया અને કે છે ફિરથી એને કહેવાનું શરૂ કર્યું, मैं नौकरी की तलाश में उधर-उधर घूम रहा था। कि હું નોકરીની તપાસમાં અહીંથી ત્યાં ભટકી રહ્યો દિનભર અને આખો દિવસ રખડીને હું થાક્યો હતો। પાછો ફરી રહ્યો હતો ત્યારે રસ્તાની અંદર એક પરિચિત છોકરી મને મળી। બદહવસી અને કે ઘબરાયેલી आविने बोले, मोहन मुझे बचा लो। અને કહે છે કે એ મોહન મને બચાવી લે। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने कहा कि तारा साथे શું થયું? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। અને છોકરી કહે છે કે મારા માતા પિતા છે એક ઘરડા અડધી ઉંમરના व्यक्ति સાથે મને વેચી રહ્યા છે। कुएं में गिरकर जान दे दूं, किंतु उस कुछड़ अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। હું કુવામાં પડે એની મારો જીવ કોઈ નાખીશ, જિંદગી ખતમ કરી દઈશ, પરંતુ આ અધેડ વ્યક્તિ સાથે હું નહીં જાઉં। मैं बहुत अमंचन में पड़ गया कि હું ખૂબ વિચારમાં પડી ગયો। क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं? હું શું કરું અને શું કરી શકું? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां से ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। इसके हूं पुलिस स्टेशन लई गयो અને थाने में जाके અને કે હું पुलिस स्टेशन માં જઈ અને હકીકત બયાન की। એટલે કે જે આ છોકરી સાથે ઘટના બની એની पुलिस स्टेशन में जान કરી। वे कुछ देर सोचते रहे, थानेदार भी कुछ देर, थानेदार પણ थोड़ी जमादार પણ थोड़ा विचार करवा लगे, क्या किया जा सकता है यानी कि आना માટે શું કરવું યોગ્ય છે। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर उसने माँ बाप को हवाला में बंद कर दे, लेकिन फिलहाल चिंता है इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। इसके थानेदार कहूं कि હું एफआईआर दर्ज कराई અને મા બાપને હવાલામાં બંધ કરું, પરંતુ અત્યારે હાલ ચિંતા છોકરીની છે, આના માટે શું કરવાનું આવે। एक छोटी सी चुटकी के बाद में एकाएक बोला, तुम्हारी शादी हो गई है। અને થોડી વાર બંધ રહી અને થાનેદાર બોલ્યા, તારા લગ્ન થઈ ગયા છે। मैंने न मैं सीट दिलाया, अंतरिक्ष में ना कहने मसला करवा लो। तो बोले, तुम उसके साथ शादी क्यों नहीं कर सकते? तुम के मारा साथे विवाह नहीं कर सकते? मैं तो इस अक्षमंजस में पछतावे चक्रा गया। इसके आप पछतावे साथे मैंने थोड़ा चक्कर आ गया, किंतु कुछ वक्त बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है, परंतु थोड़ा बार बच्चे એવું લાગ્યું કે આમાં પણ બુરાઈ છે। मैंने कहा અને मैं કહ્યું, सर इससे तो कुछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने सूची सीट हिला दिया, लेकिन क्या मोहन? અને કે છે એને પૂછી લો છોકરીને। થાનેદારે છોકરીને પૂછ્યું તો સ્વીકૃતિમાં સર હલાવીને હા જવાબ આવ્યો। તો કે છે લેકિન મોહન કે છે परंतु શું મોહન? बाबूजी, लेकिन यह फिर भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती है, बात तय हो चुकी थी। फिर के बाबूजी, मारी भाभी છે
अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहते हैं એની બહેનની સાથે કે છે મારા વિવાહ કરવા માંગે છે વાત કે છે થઈ ગયેલી છે એટલે કે છે અમારો પ્રસ્તાવ મુકાઈ ગયો છે फिर परंतु बाबूजी मैंने सोचा भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा અને મેં વિચાર્યું કે એની ભાભીના બેન સાથે કોઈ પણ સારો આદમી વિવાહ કરી લે છે यहाँ कोई संकट नहीं है અને એના પ્રત્યે કોઈ સંકટ નથી लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है मैं विचार्યું કે ભાભીની બેન સાથે કોઈ પણ લગ્ન કરી લે છે પરંતુ અત્યારે હાલ આ છોકરીની જિંદગી કેમ છે खतराમાં છે लड़की सुंदर भी है परिचित भी है सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है आ छोकरी सुंदर છે અને પરિચિત હું જાણું છું પરંતુ વાત એવી છે कि यह संकट में है એ વાત એવી છે કે આ छोकरी કેવી છે અત્યારે संकटમાં છે उससे विवाह करना उचित भी होगा और मानवीय भी लेकिन क्या કે આના સાથે વિવાહ કરવા એક પ્રતિકર હોગા અને કે માનવી भी કે એક માનવીયતાની દ્રષ્ટિએ આ વિવાહ યોગ્ય છે પરંતુ लेकिन क्या हाँ अब समस्या है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा અને કે સમસ્યા એ છે કે અત્યારે હાલ એના સાથે વિવાહ કેવી કરવા समस्या हो जाएगी અને એક નવો વળાવ बात हुए છે यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दी जाएगी आ छोकरी जो ना घर जाए तो पाछी बेचने बेच देવામાં આવે जाने का संकट में साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे અને કે હું એને સાથે લઈ જાઉં તો મારા ભાઈ અને ભાભી બંને મારા પ્રત્યે ઉઠી જાય उससे मैं माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे અને છોકરીના મા બાપ છે એ છોકરી ભગાડી દેવાનો મારા ઉપર કેસ કરી દે છે जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए उसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ लड़की से माँ बाप की खिलाफ शिकायत लिखकर रख लेता हूँ इसके थानेदारे એમ કહ્યું કે આ છોકરીના મા બાપ છે રિક્ષાવાળો કે છે તો કે મારા ઉપર છોકરી ભગાડી જવાનો કેસ કરે અને મને હવાલા કરવાનો કહે પરંતુ થાનેદારને આ સમસ્યા આ વાત સાંભળીને થાનેદાર બોલે કે આ સમસ્યા હલ કે જે થોડા દિવસ માટે આ નારી નિકેતનની અંદર આ છોકરીને મૂકી દઈએ અને પછી એના મા બાપ ઉપર આપણે એફઆઈઆર દર્જ કરી દઈએ છીએ तो एना प्रति शिकायत હું દાખલ કરું છું 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी અને કે છે થાનેદારે 15 દિવસ પછી આ છોકરીની વિવાહ મંદિરની અંદર કરાવી દે છે मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहां होते हैं मुझे तो इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है लगता है कथा सुन रहा हूं અને કે છે લગા કે મને આ વાત પર વિશ્વાસ નથી મોહન ને કે છે કે આ વાત થાનેદાર કોણ અત્યારે આવા કે છે થાનેદાર સાહેબ જવાબદાર ક્यों હોય છે મને આ ઘટના જાણે વિશ્વાસ નથી બેસતો मैं કે છે હું એક વાર્તા સાંભળતો હોય એવું મને લાગે છે आप सही कह रहे हैं बाबूजी लेकिन यह थानेदार कवि भी है કે છે તમે સાચું કહો છો આ થાનેદાર છે કોણ છે કવિ પણ છે कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ता है यानी कि कवि सम्मेलन के अंदर कविताओं पर महत्व है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है इसकी कविताओं છે ये मानवीय संवेदना થી ભરેલી હોય છે और तब ठीक है भाई हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ता है किसी भाई ठीक છે कोई પણ ક્ષેત્રની અંદર કોઈ ને કોઈ ભગવાનનું રૂપ લઈને આવતો હોય છે हाँ तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे
खपाओगे और हमें घर से निकाल दिया અને કે છે આ વાતને લઈને મારા ભાભી અને ભાઈએ એની ઘરની અંદરથી કાઢી મૂક્યો અને ત્યાંથી મારા પુત્રે ઉઠેલા છે અને મને ઘરમાંથી निकाली दिया। एक तो मैंने उनकी शादी से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से वह किसी और जाति की है एक तो एनी बेन साथे में भाभीनी बेन साथे में लग्न કર્યા અને જે છોકરી સાથે में लग्न કર્યા એ બીજી જ્ઞાતિની હતી। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए અને કે છે લેખકને બંને તો તમે બંને ग्वालियर आ गया। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवास होना कठिन था क्योंकि आगरा के अंदर हमें रहना मारू कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपना पन न हो किंतु यह परायापन उससे अपने से अच्छा है कि आप पराया विस्तार में शहर में आपला पोताना भले न रहा परंतु पोताना करता पराया सारा अपने मन से अच्छा है। न जो दिन रात प्रतिकृत व्यवहार बनकर तन मन को उद्दीत करता रहे। हाँ सही कह रहे हो कच्चे पराया व्यक्ति कान માટે સારા કે તન મન કિચકારો તન અને શરીર અને મનને ઉદ્દીત कर रहे કે તન અને મનને કાયમ પ્રસન્ન રાખે। हाँ सही कह रहे तो यह कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया कि कोई नौकरी धंधो तो होतो नहीं, खाली में शुरू ऑटो रिक्शा ले ली उसके सहारे चल रहा मैंने कि आ ऑटो का सहारे मारी जिंदगी जीवी रहे छो। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो भगवान, लेकिन किसी वास्तव में तुम मोटो मान से भगवान। बड़े बड़े लोग तो नारी में बड़ी बड़ी बात लेक्चर देते हैं कि नारी के अंदर लोगों मोटे मोटा लेक्चर आते छे, लेख कविताएं लिखते रहते हैं किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारे कि लोगों नारी के अंदर मोटा मोटा लेक्चर आते छे, लेख लगे छे, कविताओं लखता હોય છે પણ એમને વ્યવહારમાં ઉતારતા હોતા નથી। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशग्रस्त होने से बचा लिया, परंतु ते एक छोकरी ने एनी जिंदगी बर्बाद करतो ते बचावी लिया। साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया અને એની जिंदगी સાથે તે सम्मानपूर्वक लगावी लिया। बाबूजी उस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला है। इसके लेखक है बाबूजी मैंने यह बात की बहुत संतोष है। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया किंतु वह तो प्रातः मुझे संकटों से उबारती रहती है कि मैं तो एक वखत ने उद्धार करो छे परंतु एक कायम માટે प्रातः टकाय सवारे सवारे મને આ સંકટોથી બચાવે છે। संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया कि मोहन की आज बात से हमारा मन पर छवाई गई અને કે છે કેટલો બડો એ થઈ ગયો। गाड़ी का समय हो रहा था और कि हमारी गाड़ी નો समय થઈ રહ્યો। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उससे અને કે છે हमारे बस नो समय दे रहे तो मोहन हमने गए बस स्टैंड आ गया। उससे मैं 500 रुपया का नोट देने लगा तो बोला रहने दीजिए बाबूजी, लेकिन इसके 500 रुपया आप ही रहे तो ત્યારે એ બોલો કે રહેવા દો બાબूजी, अरे तुम्हारा परिश्रम है क्योंकि इसके તમારો તો છે પરિશ્રમ છે, कोई दान थोड़ा ही दे रहा અને લેખક કે તારા પરિશ્રમ ના છે મહેનત ના છે હું તને દાન આપી રહ્યો નથી। बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया उनके लेखक ने बाबूजी मैंने माता पिता नो प्यार नहीं
खुशी के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है અને આ તમારા વ્યવહાર સાથે પૈસાનું કોઈ મૂલ નથી. पैसा तो लोग से कमा ही लेता है यानी कि पैसा तो लोग को कमाई ले છે. बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो कि बेटा मारी पर तो विचार मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ અને લગન કે છે કે મારું તો વિચારો હું દીકરાનું શોષણ કરી શકતો નથી. लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा. इसका बहुत છે અને આટલો લઈશ તો તમારું શોષણ થાય. यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस कर रहे અને કે છે કે 500 લઈ અને 300 वापस करने लगा અને કે છે કે 200 એને રાખ્યા અને 300 લેખકને પાછા આપ્યા. बोला मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी અને બોલે છે કે મને આટલો પરાયો ન ગણો. हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा. मेरा फोन नंबर तो आपके पास है कि जब તમે આવો ગ્વાલિયર ત્યારે મને